Good afternoon, everyone. Mm, Good afternoon, sir. Good Okay, afternoon, so here, sir. Good afternoon, sir. Sir. so here we will wait for 2 or 3 minutes so that other can also join this meeting, and then we will start our session. Okay, so here I'm starting my session. So I'm sharing my screen first. So I have shared the screen. I hope my screen is visible to all of you. Yes. Okay, so now we will proceed further with some more feature available in Python programming. So here, see next, I'm taking the case of a string. String basically it is alphanumeric value. So string is used to represent any value which can take alphabet as well as numerals. But whenever you want to specify your string value, you can use single quotation, double quotation, or triple quotation. So you can use either of the convention to specify your string value. But generally, what we do, if you are dealing with single value or you are dealing with such type of value which is being completed in single line only, then you can prefer single or double quotation. But if you are dealing with such type of string value which is spanning across the multiple line, suppose you are working with paragraph kind of thing which is containing multiple lines, in that case it is better to use triple quotation. Although you can use single or double quotation also for these, but you need to take care of line continuation, and you need to be careful about line break also when a particular line break is taking place. Means, see, suppose for example, so डायरेक्टली सेल पे ही हम यहाँ पे कोड लिख लेते हैं.
suppose if you are dealing with some kind, such a value which is being completed in one line only, suppose I am writing CDAC Noida, so you can specify in single quotation, you can specify the same thing in double quotation also. Already we have taken double quotation, so this time I'm taking single quotation. Even you can refer triple quotation also, and to specify triple quotation you can use this single quote 3 times, or you can use double quotation also thrice. So, and if you are dealing with such type of which is coming in multiple lines, suppose if you are using this kind of value, or it is better to use in script. I am completing here only. We are writing this value in script. That will be better. Although we can write here also, but वहाँ पे जो look and feel है वो थोड़ा सा और better होगा. Suppose I am writing some paragraph like this. Suppose we are writing like this, right? So here, if you are writing such type of value in triple quotation, that is fine. In triple quotation, in whatever way you will be writing, it will be printed as it is, right? So here, चाहे आप space भी दें कुछ, suppose यहाँ पे मैं ज़्यादा space दे देता हूँ, so it will be printed as it is. To print this, I am just writing print, and we are printing the value of this x, which is containing one paragraph, string type of value. So if you are executing it, I'm giving a name to this and storing it our location. So see, it is being printed properly. But now suppose if you want to do the same thing by single or triple quotation, suppose I am using only double quotation, suppose, as I mentioned, we can use this also. So it will give you error. Even you can see the color also, it has been changed. Because here in this case, when you are using single or double quotation for this, you need to specify that this second line is in continuation of this earlier one. And even this line should be displayed in a new line. You need to use something for that also. So for that purpose, we use escape sequences. So to specify escape sequence, actually this character, it is known as, earlier I have told you, it is known as line continuation character, but generally it is known as escape sequence. And when we are using, so when you are using something with this, so it can be used to use for another purpose. Suppose if I am using slash and it means you are specifying the case of new line, your cursor will be shifted into new line. If you are writing slash t, it is used to specify your horizontal tab, right? It is used to specify horizontal tab, and one tab is 4 cursor space. I have already told you. So if you want to specify some spaces horizontally, then you can use on tab. So similarly, we have various other sequences also. You can refer internet for that. We have slash and slash t, slash v, right? Slash b. There are so many, but mostly we use these. So here, so to specify that line continuation, we are using this, but this thing, this line should come in the new line. What you will do before that, you can write slash n, means moment slash n will come, it will shift the pointer into the line, and this new line is also the part of this, of the same string. So we are using line continuation. So you need to do it here also. So if you are using double quote here or single quote, you need to take care of this after each and every line, right? If you are using where okay, slash and slash, and here we have this.
Now we can write it here. That we need to put it that here also. So see, it is being printed. We can put slash and slash here also. So now it is working in a similar way. So it may be the case, but actually, so what we do generally, if you are dealing with single value or such type of value which is coming in the single line, you should prefer single or double quotation. And if you are dealing with some kind of paragraph where your value is spanning across the multiple line, you should use triple quotation, right? So generally we use that approach. And now come to this comment. What is comment? Comment is used for the description of the code, right? And it is ignored by the interpreter. So why we require comment? Suppose imagine one programmer is working on some project and he or she has written very complex logic, right? And after some time, he or she has got better opportunity. So he or she has left the company, and some other programmer will come. Another new programmer will come to work on the same project. So it may be the case that new programmer may not be able to understand the complex logic written in the form of Python lines of code in that project, right? So to avoid that kind of problem, what we do whenever we are writing some lines of code, we can add some description with it. So it is just for the description of the developer, and it is ignored by interpreter, means it is not the part of syntax. Suppose here I want to write that this line is for means any code, whatever we are writing. Suppose I want to write some program. I am creating another script. And suppose I want to write a program for addition of two number, suppose. So I want to specify that thing. So here you can, if you are writing like this, suppose if you are writing like this, obviously it will create error, because as per the Python programming syntax, it has nothing to do. These are identifier and you cannot specify like this, but I want to display it just for the description for the developer. So we can use comment. To use any line or lines as a comment, you just need to put hash before that. Moment you are putting hash, whatever you are writing after hash, it will be treated as a comment. Means it is just for this, it is for description of the lines of code, line of code or lines of code that you are writing. You can add some meaningful description with that, and it is ignored by interpreter. So interpreter will not consider it. And now we can write down our code. Suppose I am taking first number, say I'm calling it fn, and I'm taking some value. After that, I'm taking second number. For that purpose, I'm declaring one variable sn and storing some value. After that, we are performing the addition of these two and storing the result in another. So to store the result, we require some another variable. Suppose I'm declaring another variable. I'm calling it result equals to, and after that, I just want to print it. Suppose I want to display that this is the result. So you can add comment here also. So I suppose here I'm writing any meaningful description you can write. It is it depends on you what you want to write. I'm writing final result of addition. So when you are executing it, whatever lines are working as a comment, it will be ignored by the interpreter. So here I'm storing it and giving a name to this, example 5.py suppose. So here I am clicking on this. So see, it is showing that. So that is comment, right? That is the meaning of comment. And if you want to use multiple line comments, so you can put hash before those lines simply, right? Python variable we have already specified, right? And here you can see we are declaring three variable, and as I mentioned, based on the assigned value, data type will be accepted by this variable, and here we are just printing it. So it is very simple, and here I'm using this as a comment. So even it is also possible that if you want to store same value with multiple variables, one option is that
You can write the same thing in 3 line by writing like a equals to 1, in next time b equals to 1, c equals to 1, or you can write like this also, right? So you can write you can specify the things like this also. Salmi मैं directly लिख लेता हूँ. So in this way, same value, suppose I have written 10, so same value will be assigned in this. If you check the value of A, it will be 10, the value of B will be 10, the value of C will be 10, right? So that is fine, but you cannot write like this. If you will try this, will it be working? What do you think? Will it be working? No, sir. Is it? So it will not be working, because if you look at the logic A equals to 10, that is fine. But what is this? 10 equals to B means we have not specified memory. Before specification of memory, we are specifying value, which is wrong logically. So if you will try to use this, it will give you syntax error, right? So you cannot write like this. And there is one more thing. Suppose you want to specify different values in these 3 different variable. One option is that you will be writing that in 3 different lines, right? Or you can do in same line also. Suppose you can write like this also, equals to 10, b equals to hello, equals to 12.56 suppose. So one option is that, but you can do that thing. So obviously it will print that value if you check it, right? In cell we can write it directly. अगर script में use करेंगे तो print issue करना पड़ेगा display कराने के लिए. You can do the same thing in single line also by writing like this: A equals to B equals to C equals to, and here you can specify value whatever you want to store in this. Suppose I'm storing some value. So basically what will happen when you are writing like this, this 10 will be stored in A, hello will be stored in B, this value will be stored in C. So if you are using it, so here if you are taking it, now we are having this. So this is another alternative approach of that, but you need to be careful with this. Suppose if I am writing like this, what do you think? Will it be working? No, sir. No, sir. If you are trying, obviously it will give error, because you are specifying 4 value, but to store this you are specifying only 3. So obviously it will give you value error, and it is showing some description also about this. Too many values to unpack. Actually this operation this operation is known as unpacking. It is known as tuple unpacking. You will know, you will learn about this tuple later. It is tuple unpacking. Basically we are unpacking the value, right? So we have this, and even if you are writing like this, see, and if I'm writing like this, suppose, so what do you think? Will it be working? Yes, sir. So yes, it will be working. Actually this is known as packing. This operation is known as tuple packing, means you are specifying these value. This thing is known as packing. You are specifying multiple values in the form of single variable, and this is unpacking, where you are just putting these value in different variable. So this is unpacking, this is packing, this is unpacking. Basically it is tuple packing, tuple unpacking. So don't worry about that tuple word here. We will be discussing about this tuple in detail later. So we can specify the things like this also, and here also you can check the value will be same. If you look at the output of it, so it will be same. So we can have different ways also to specify the values in Python. So I have mentioned this thing here. Okay, so now here come to one more thing. Come to this example. Actually here I am specifying the static value. I'm working with the static value. What about if I want to provide this value dynamically? रन टाइम पे पास करना, मतलब मेरे को ये वैल्यू यूजर से लेनी है. इफ आई वांट टू सप्लाई दीज वैल्यूज और रन टाइम पे वो वैल्यू एक्सेप्ट करे, तो हाउ कैन यू डू दैट? अभी तो स्टैटिक मैनर में काम कर रहा है ये, राइट? तो उसके लिए इफ यू वांट टू टेक द वैल्यू फ्रॉम द यूजर फ्रॉम द कीबोर्ड, फॉर दैट पर्पस यू विल बी यूजिंग इनपुट function.
So here even with this input function, you can prompt the user about entering the value by specifying some message, and this message defined by you. So here even I can prompt it with some message, like you can specify any message here. Suppose I'm writing enter first number. Suppose here I'm writing this. So what will happen? So whenever you are execute, this line will be executed because it is in Python. Here we use interpreters which will work line by line. So it will go to the first line first. So it will specify this message to the user, and when user will enter any value, that value will be stored in this variable. Similarly, I am specifying value for second one also. And here I am defining different message. This message defined by you. You can define any message. So but here I am writing enter second number. So here also it will prompt this message, and user will enter some value, and that value will be stored here. After that, as per this operator, operation will take place and store the result in this, and we are just printing it. Even to print the output also, I am specifying, I can specify message like this: result. There are various ways of this: result of addition equals to, and see here I am using comma. This comma is what, see, this is string and this is simply variable. So this comma will be used as a concatenation operator. Concat means combining the value, this value with this value. So both of these value will be combined together. So here it is working as a concatenation operator. इन दोनों को combine करने के काम आ रहा है ये, right? तो ये display करेगा output को. So what do you think? What should be the output? Suppose if I am executing it, suppose it is asking some value, I have written 10 as per this code. ये तो close कर देते हैं. So here I am entering this. When you will enter, it will come to the second line. It will prompt the user with this message and the second number. Suppose I have entered 20, and when I will press enter, obviously after that this operation will take place and it will display the output with this message जैसा आपने लिखा है. So what do you think? क्या output आना चाहिए? If I am executing it, हम expect कर रहे हैं यहाँ पे output 30 आना चाहिए. Output आना चाहिए result of addition equals to 30. यहाँ पे तो operation perform होगा. But see what will happen. It is not taking 30, it is specifying 1020. Actually what happened, by default the return type of this input function is string. So whatever you are passing here, it is not numeric 10. Actually these are two character 10. तो ये जो आप एंटर कर रहे हो ना, ये 10 की तरह ट्रीट नहीं हो रहा है, ये ट्रीट हो रहा है आपका दो करेक्टर की तरह. ये 10 न्यूमेरिक 10 नहीं है. ये जब आप इनपुट फंक्शन क्या, इनपुट फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है, जो वैल्यू रिटर्न करता है, उसको वो स्ट्रिंग की तरह कंसीडर करता है. सो इट इज दिस. एंड इफ आई राइट, व्हेन वी आर राइटिंग 20, it is like this. It is not 20, actually these are two character 20. And when you are writing plus with this, actually what happen, if both the values of either side of this plus are of string type, it will work as a concatenation operator. तो concatenation operator की तरह काम करता है. Concatenation means it will combine these value together. तो obviously ये concatenation करेगा और जो आउटपुट आएगा 1020, ये combine हो जाएंगी. अगर मेरे ये न्यूमेरिक वैल्यू होती 10 प्लस 20, अगर ये न्यूमेरिक 10 और 20 होते, ऑब्वियसली इस केस में ये जो प्लस है इट विल वर्क एज ए एडिशन ऑपरेटर. उस केस में फिर 30 आता, राइट. और अगर इसका एक केस हम ऐसा लें कि एक वैल्यू स्ट्रिंग है और एक वैल्यू आपका न्यूमेरिक है, इस केस में अब ये कंफ्यूज हो गया. अब ये ऑपरेटर हो गया कंफ्यूज. इसको पता नहीं लग रहा वेदर शुड आई वर्क एज ए कॉन्कैटेनेशन ऑपरेटर लाइक दिस और शुड आई वर्क एज ए एडिशन ऑपरेटर लाइक दिस. So there is a confusion. So obviously in this case, if you have such type of scenario with this plus, it will give you error, right? With plus it is happening. So first thing is that it is taking this thing as a string, but we want that this value, whatever value we are entering, it should be treated as a number. तो मैं क्या करता हूँ, उस पूरे जो वैल्यू आई है स्ट्रिंग की, उसको कन्वर्ट कर देते हैं. जो कैरेक्टर 10 ले रहा है उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसी न्यूमेरिक टाइप में.
अगर आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो यू कैन राइट लाइक दिस इंट, और ये पूरा जो एक्सप्रेशन है पैरेंथेसिस के अंदर. So here we have specified this within parenthesis. Excuse me. Hello. Sir. A student, just wait for a minute. Actually, our course coordinator, Mr. Ravi Pal, wants to connect with us. So, I'm just sending the credential. So just wait for 1 or 2 minutes. I'm sending the credential to him. Okay, sir. Okay, students. So here I have shared the screen. I hope my screen is visible to you. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So here, so basically, if you want to convert into some numeric type, you can use this type as a typecast operator. Typecast means conversion operator. अगर int में करना है तो I can use int. If you want to convert into decimal, then you can use float instead of int. Similarly, I am doing it. So what will happen? Whatever value you will enter, it is treating that value as a string, क्योंकि input function का return type string है, and after that we are converting that string value into this type, that is integer. Similarly, I am doing the same thing here also. तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसको मैंने int फंक्शन के अंदर कर दिया, फिर ये परफॉर्म हुआ तो ये एडिशन ऑपरेटर की तरह काम करेगा, एंड आफ्टर दैट वी आर प्रिंटिंग इट, एंड हियर आई एम यूजिंग कोमा. तो कोमा के साथ कॉन्कैटिनेशन ये दोनों को एक्सेप्ट कर सकता है. सी यहाँ पे ये स्ट्रिंग है और ये जो रिजल्ट के अंदर वैल्यू है दैट विल बी ऑफ इंटीजर टाइप, सो इट विल एक्सेप्ट दैट. हाँ, प्लस होता तो एरर की तरह ट्रीट करता है, उस पर भी अभी हम आएंगे. सो अभी वी आर टेकिंग दिस थिंग ओनली. सो इफ आई एम एक्सिक्यूटिंग इट, so see here it is asking first number. Suppose I am doing the same thing, any value you can enter, but I am entering the same value, suppose. So it is giving you 30 now, right? And now, so here we can format this string output in different ways. So I am going to discuss some more variation of it through which we can format the string output in different way. Output same आएगा, लेकिन there are different ways to format our string output जो हमें डिस्प्ले कराना है.
सो एक तरीका तो ये है. There may be one more way that you can do the same thing by using plus, but with this plus there is one thing that I have mentioned. So अगर plus के दोनों तरफ, if either of the side, in both the side of those values are of string type, both the values are of string type, then it will be working as a concatenation operator. If both the values are of either of side of this here, both the side are numeric type, then it will be working as a addition operator, and if there are different value, then it will give you error. So in this case, what do you think? यहाँ तक का तो कोड मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, हो ही रहा है, हमने चेक किया है. When it will come to this line, what do you think? क्या होना चाहिए अभी? Error. अब मैंने प्लस यूज किया है, so obviously it will give the error. जैसा मैंने अभी प्रीवियसली रीजन बताया. तो इफ यू आर डूइंग द सेम थिंग, सपोज मैं कोई वैल्यू एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे, सो सी यहाँ तक तो इसने कोड चला दिया. यहाँ पे मेरा जहाँ तक पॉसिबल था, क्रिएट इस लाइन तक ये कोड चल गया. पर जैसे ही इस लाइन पे, लास्ट लाइन पे, इट इज शोइंग टाइप एरर, कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंट. सो एक्चुअली या तो दोनों को स्ट्रिंग करे या दोनों नंबर होना चाहिए. तो ये तो हम नंबर कर नहीं सकते, तो इसी को हम स्ट्रिंग कर देते हैं. तो व्हाट वी विल डू टू कन्वर्ट दिस न्यूमेरिक टाइप, जो कि इंटीजर टाइप है रिजल्ट के अंदर, क्योंकि ये दोनों इंटीजर है. सो टू कन्वर्ट इनटू स्ट्रिंग टाइप, यू कैन राइट लाइक दिस. तो यहाँ पे you can format the string output by using plus also, but there you need to be careful with this. तो अब ये भी string है, ये भी string है, और तो ये concatenation operator की तरह काम करेगा. And if I am doing, we will be getting the same output. तो अगर हम अब चेक करें अपने इस कोड को, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, so it will work properly, right? So here it is working properly. और एक चीज और होता है, जब ये कोमा है ना, कोमा बाय डिफॉल्ट एक कर्सर स्पेस ले लेता है. तो अगर मैं इसको यहाँ से हटाऊं तो ये कर्सर स्पेस ले लेगा. तो एक और भी दे रखा था, तो इसने 2 कर्सर स्पेस कर दिया. अगर मैं प्रॉपरली डिस्प्ले कराने की बात करें इसको हम, सो राइट से अब एक सेम इंडेंटेशन है, तो दोनों से मेरे को सेम आउटपुट मिल रहा है. देयर आर वेरियस अदर वेज आल्सो दैट यू कैन सी ऑन द इंटरनेट फॉर फॉर्मेटिंग योर स्ट्रिंग आउटपुट. आई एम गोइंग टू डिस्कस दोज आल्सो टू यू. एक ऑप्शन होता है कि आई हैव मेंशन दैट वी कैन यूज दिस पाइथन एज ए प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आल्सो. सी प्रोग्रामिंग में अगर आप देखें तो वहाँ पे ना कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं किसी स्पेसिफिक टाइप की वैल्यू को रेफर करने के लिए. मींस वहाँ पे हम यूज करते हैं %d. ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है. %d इज यूज टू स्पेसिफाई इंटीजर वैल्यू. इसी तरह से %i भी होता है. वी हैव %f to specify float value. And to specify string value we use %s. इस तरह से कई फॉर्मेट स्पेसिफायर है. मैंने अभी मोस्टली हम वैल्यूज के साथ वो करें तो मैंने उन्हीं के फॉर्मेट स्पेसिफायर लिए. सो इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई योर स्ट्रिंग वैल्यू. इसको मैं कमेंट की तरह यूज कर लेता हूँ, जिससे कि इंटरप्रेटर मेरा इग्नोर करे, नहीं तो ये कंसीडर कर लेगा कोड की तरह, और कोड के अकॉर्डिंग तो इनका कोई मीनिंग है नहीं है सच. सो अगर तो मैं एक ऐसी अप्रोच भी यूज कर सकते हैं जहाँ पे हम इनका यूज कर सकते हैं, जैसा सी प्रोग्रामिंग में हम यूज करते हैं थोड़ा थोड़ा, उससे सिमिलर सा सिंटैक्स बनता है ये. सो वी कैन स्पेसिफाई, आउटपुट सेम आएगा लेकिन उसको करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा इस अप्रोच में. दिस इज अनदर ऑल्टरनेटिव वे ऑफ डूइंग द सेम थिंग. सपोज आउटपुट मेरे को सेम दिखाना है, सो वी कैन राइट लाइक दिस, रिजल्ट ऑफ एडिशन equals to %d, and after that यहाँ पे कुछ ऐसा वेरिएशन लिखते हैं %, और यहाँ पे वैल्यू कहाँ से आ रही है मेरे को, रिजल्ट से. तो ये क्या कर रहा है, सी सिंटैक्स ऐसा है, एक तरफ स्ट्रिंग, यहाँ पे ये जो % है सेपरेटर की तरह काम कर रहा है इस स्ट्रिंग आउटपुट में, जहाँ पे मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर लिया, और इस फॉर्म इसके बाद % का जो ये वेरिएबल या वेरिएबल्स हैं ये यूज हो रहे हैं इसकी वैल्यू को स्पेसिफाई करने के लिए. तो जब मैंने लिखा रिजल्ट ऑफ एडिशन को %d, इट विल टेक दिस टेक द वैल्यू फ्रॉम रिजल्ट, एंड %d फॉर इंटीजर वैल्यू, एंड वी हैव इंटीजर वैल्यू, सो इट विल रेफर दैट. सी इफ आई एम एग्जीक्यूटिंग इट, आउटपुट सेम रहेगा. दिस इज जस्ट अनदर डिफरेंट वे टू डू द सेम थिंग. अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू एंटर, कुछ भी वैल्यू एंटर करो, सपोज मैं ये कुछ वैल्यू एंटर करता हूँ, तो सी आउटपुट इज सेम. इसको थोड़ा सा और मीनिंगफुल बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, अब सपोज मेरे को रिजल्ट है ना कुछ ऐसे दिखाना है, रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑफ, उसके बाद फर्स्ट नंबर की वैल्यू एंड
सेकंड नंबर की वैल्यू इक्वल्स टू फिर रिजल्ट की वैल्यू। सपोज इस तरह से प्रिंट करना है और इनके लिए भी करना है वो काम, तो करते हैं। तो कैसे लिखेंगे उस केस में? हम ऐसे लिखेंगे रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑफ, अब तीनों में कर रहे हैं हम वेरिएशन को, अप्रोच यही रहेगी रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑफ। उसके बाद मेरे को चाहिए फर्स्ट नंबर की वैल्यू, तो मैं कॉन्कैटिनेट करूंगा और फर्स्ट नंबर की वैल्यू एफ एन में, एफ एन कोमा, उसके बाद मैं प्रिंट करना चाहता हूँ एंड विद सम स्पेस, तो फिर से स्ट्रिंग लिया, स्पेस लिया एंड, और उसके बाद इसको कॉन्कैटिनेट कर दिया। उसके बाद मेरे को सेकंड वैल्यू को स्पेसिफाई करना है जो कि स्टोर्ड है मेरे सेकंड वेरिएबल एस एन में। उसके बाद मेरे को प्रिंट करना, आउटपुट को कॉन्कैटिनेट करना है विद दिस मैसेज इक्वल्स टू, और स्पेस भी दे दिया हमने। वैसे लास्ट में हम स्पेस ना भी दें तो भी कोई नहीं चलेगा, क्योंकि कॉमा है ना, कॉमा वो अपने आप भी ले लेता है। सो जिस अबाउट स्पेस वो मैनेज कर सकते हैं। सो हियर आफ्टर दैट वी आर कॉन्कैटिनेटिंग विद रिजल्ट। तो अगर ऐसा करें, सी आई एम एग्जीक्यूटिंग इट। सो हियर इट इज शोइंग दैट एंटर फर्स्ट नंबर, कोई भी नंबर एंटर कर दो यहाँ पे, सपोज 10 20। so see it is showing result of addition of 10 and 20 equals to 30, right? so here we have this। अब अगर यही अप्रोच इनके साथ भी करनी हो तो हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। सो सी यहाँ पे हमें करना है रिजल्ट ऑफ एडिशन, तो हम यहाँ पे क्या लिखे, कॉन्कैटिनेट करना है रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑफ प्लस एफ एन। अब मैं खाली एफ एन लिखूंगा, प्लस है तो भी फिर वो न्यूमेरिक वाली प्रॉब्लम हो रही है, तो एस टी आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको भी, नहीं तो फिर वही पहले वाला केस क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद मेरे को करना है एंड, उसके बाद हियर आई वांट टू use plus, suppose with plus, after that I want to display the value of sn, but sn के साथ भी वो लेगा तो str में कन्वर्ट करके हमें लिखना चाहिए, नहीं तो वही सेम एरर आएगी प्लस के साथ। एंड आफ्टर दैट वी आर जस्ट concatenating, but we want to display equals to also। सो हियर विद दिस अप्रोच आई एम यूजिंग, तो यहाँ पे भी सेम आउटपुट रहेगा। अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू एंटर करूँ 15 35 कोई भी वैल्यू, तो सी आउटपुट सेम है। ये स्पेस को तो मैनेज कर सकते हो, कोमा के साथ एक स्पेस ले लेता है जैसे मैंने बताया, अगर उसको हटाएंगे तो इंडेंटेशन भी सेम हो जाएगा आपका, ठीक है। सो इट इज शोइंग सेम आउटपुट। अब ये इसके साथ भी करना हो तो हम यहाँ पे कुछ ऐसा करेंगे, सी रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑफ, उसके बाद जो वैल्यू अब वो इंटीजर टाइप है, एस एन की वैल्यू, एस एन की वैल्यू परसेंटेज डी एंड फिर से वैल्यू वो जो कि इंटीजर टाइप चाहिए इक्वल्स टू फिर से वैल्यू जो कि इंटीजर टाइप चाहिए। अब इनकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू कहाँ से मिलेगी, हम यहाँ पे उन वेरिएबल का लिख लेंगे सेपरेटर एंड टू स्पेसिफाई द वैल्यू वी कैन राइट लाइक दिस एफ एन कॉमा एस एन। यहाँ पे जितने हैं अपने वेरिएबल लिख सकते हैं। तो ये क्या करेगा, percentage will take the value from here, this percent second percentage will take the value from here, this percentage will take the value from here। so यहाँ पे भी आउटपुट सेम आएगा। और कैसे प्रिंट करना है ये हमने इसमें बताया। यहाँ पे परसेंटेज सेपरेटर की तरह काम कर रहा है फॉर्मेट में और इसकी वैल्यूज में। so if I am executing it, see we are getting the same output, right? यहाँ पे भी सेम आउटपुट है। नाउ देयर इज वन मोर वे, अब हम एक और तरीका यहाँ पे देखेंगे इस फॉर्मेटिंग का। ठीक है, सो नाउ वी विल टेक वन मोर वे ऑफ इट। तो मैं क्लोज कर देता हूँ, स्क्रिप्ट को ओपन कर लेते हैं। एक और जो हम यूज करते हैं जो इंटरनेट पे आप काफी देख सकते हो, प्रिंट बाय यूजिंग फॉर्मेट मेथड। वी कैन डू द सेम थिंग बाय यूजिंग फॉर्मेट मेथड आल्सो। ये भी एक ऑल्टरनेटिव है। तो मैं आपको चारों अप्रोच बता रहा हूँ, आफ्टर दैट इट इज अप टू यू, कैन यूज इधर ऑफ द अप्रोच, कोई भी एक अप्रोच आप फॉलो कर सकते हो। मैं फोर्थ अप्रोच पे आता हूँ जिसमें फॉर्मेट मेथड के थ्रू हम करते हैं। तो उसको कैसे करते हैं, कैसे, क्या मीनिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग द एक्सप्रेशन एंड देन आई विल एक्सप्लेन। और सपोज यही आउटपुट दिखाना है उसके लिए भी, सो वी कैन राइट
सी व्हाट आई एम डूइंग। तो इसमें भी यहाँ पे स्ट्रिंग हो गया, स्ट्रिंग में फॉर्मेटिंग होगी, कैसे प्रिंट होगी वैल्यू, और वैल्यू इसके लिए यहाँ पे बाय यूजिंग डॉट फॉर्मेट मेथड भी हम ऐसा कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली हमने लिखा रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑफ द वैल्यू एट इंडेक्स 0। तो ये जो फॉर्मेट के साथ है ना, मल्टीपल वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे जो वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं वी कैन कंसिडर दैट कि एक इंडेक्स वैल्यू असाइन हो जाती है जो कि 0 से स्टार्ट होती है। तो वी कैन स्पेस दैट वी हैव index position number 0 for the index number 0 for this 1 2, it is just like that, and to refer that in formatting we can use this curly braces। ये एक प्लेस होल्डर की तरह काम कर रहा है यहाँ पे, and here 0 means the value at index 0, that is value of fn, and 1 means at index 1 the value, it will take the value from there, that is sn, 2 means 0 1 2, that is result, so it will take the value from result, so it will print the and it will display these values as per this format। So see, if I'm executing, you will be getting the same output. So this is also one more alternative of the same। कोई भी value हम pass करें यहाँ पे, so you will be getting the same output, right? So here also you are getting the same। But suppose अगर मैं यहाँ पे ऐसा कुछ लिख दूँ, what do you think? अब क्या output आएगा? क्योंकि फॉर्मेटिंग है ये, तो जैसा आपने है जहाँ से फॉर्मेट है, जहाँ से वैल्यू कहाँ से वैल्यू लेनी है ये बताया है, तो क्या आउटपुट आएगा? वैल्यू उल्टी हो जाएगी। सपोज अगर मैं 10 20 पास करता हूँ, fn की वैल्यू 10 और sn की वैल्यू मैंने 20 यही पास की, तो क्या आउटपुट आना चाहिए इसका? 30 20 and then 10। बिल्कुल, क्योंकि एज पर द फॉर्मेटिंग इट विल वर्क। तो अगर हम देखें तो फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग दिखाएगा ये तो सिंपली। सो इफ आई एम यूजिंग इट, सी इट इज शोइंग रिजल्ट ऑफ एडिशन एज आई हैव मेंशन्ड। So see, as I mentioned 10 20, तो as per 2 की वैल्यू ले रहा है पहले, रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑफ 2 की वैल्यू मींस द वैल्यू ऑफ रिजल्ट, तो इट इज शोइंग 30। 1 इंडेक्स पे वैल्यू sn की वैल्यू दैट इज 20 इक्वल्स टू 10। तो इट इज वर्किंग एज पर द फॉर्मेट करेक्टली, बट एक्चुअली व्हाइल लुकिंग एट आवर रिक्वायरमेंट एडिशन इट इज नॉट फाइन। सो प्लीज बी केयरफुल विद दैट। ये तो बस मीनिंग रेफर करने के लिए मैंने इसको बताया। सो दीज आर सम ऑल्टरनेटिव वे, कोई भी इधर ऑफ द अप्रोच यू कैन यूज टू वर्क विद दिस। So we can take the value from the user also by default। अगर input use करेंगे बिना type cast तो उसको string की तरह treat करता है, and if you want to convert into particular type you can specify that type here। So ये जो data type है वही typecast operator की तरह भी काम करता है, typecast function की तरह काम करता है। अगर मेरे को decimal के साथ deal करना होता है तो मैं int की जगह float लिख देता है यहाँ पे, तो फिर उनको decimal value की तरह treat करता है, convert करता है आपके string को decimal में। Now with this we will proceed further। Now come to the standard data type। Actually our whole Python programming is based on 6 standard data types। तो ये हमारी जो पूरी Python programming है it is based on 6 standard data type। and these are number, string, list, tuple, dictionary and set। तो इन्हीं को वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे हम। So first of all, I am taking the case of number। How can you deal with the number? So when we are talking about number, actually there may be 3 types of number in Python programming। So we can have 3 types of number in Python programming, and these can be already आपने काम किया हुआ है, 2 पे तो काम कर ही लिया हमने, int और float। So नंबर की बात करें तो we have this, we have int, we have float, and there is one more जो सपोर्ट केवल पाइथन में मिलती है, बाकी में ये डायरेक्ट सपोर्ट नहीं है इसकी, एंड दैट थिंग इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर तो क्या होता है, व्हेनेवर यू आर कैलकुलेटिंग द स्क्वायर रूट ऑफ द नेगेटिव वैल्यू इट विल जनरेट द केस ऑफ
दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, जहाँ पे इमेजिनरी नंबर का भी केस हमारा आता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कुछ रिप्रेजेंट कुछ ऐसा करते हैं, जनरल मैथमेटिक्स की बात करें तो हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 2 प्लस i3, जहाँ पे i का मतलब क्या होता है, आई स्क्वेयर, ये एक्सपोनेंट कहलाता है पाइथन में, तो इसलिए मैंने लिखा आई रेज टू पावर 2 आई स्क्वेयर इक्वल्स टू -1, and whenever you are calculating the root of negative value, it will generate the case of imaginary number, that is iota, it is known as iota। तो जनरल मैथमेटिक्स में तो हम ये यूज करते हैं, राइट, आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1, बट हियर ये एक्सपोनेंट क्यों यूज किया है, क्योंकि ये पावर को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं यहाँ पे हम इसको यूज करें ना, सेल को अगर मैं ओपन करूँ, इसको तो क्लोज कर लेते हैं, पहले तो इस ऑपरेटर का बता देता हूँ मैं। तो इट मीन्स 2 रेज टू पावर 3, तो क्या आउटपुट आना चाहिए अगर मैं 2 रेज टू पावर 3 की बात कर रहा हूँ, अगर मैं x करूँ तो x के अंदर और प्रिंट करे वैल्यू को, 8, क्या आउटपुट आना चाहिए, इट विल बी 8, राइट। सो दैट इज एक्सपोनेंट, राइट। सो अगर हम लिखें x इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर 5, तो क्या आउटपुट आना चाहिए x का, 2 रेज टू पावर 5, दैट इज 32, राइट। सो दैट इज एक्सपोनेंट। वैसे तो एक फंक्शन भी है पावर, डायरेक्टली भी हम यूज कर सकते हैं पावर, और ये दो पैरामीटर यहाँ पे ले रहा है, तो पहला पैरामीटर 2 और उसकी पावर। सो अगर मैं करूँ तो आउटपुट इसका भी सेम ही आएगा, या तो हम ऑपरेटर यूज करें या ये फंक्शन यूज करें, दिस इज वन ऑल्टरनेटिव ऑफ इट। सी इट इज आल्सो 32। अगर आप सेव करना चाहते हैं किसी वेरिएबल में तो सेव करके लिख देते हैं हम एक्सप्रेशन को, तो यहाँ पे आ गया, और वाई की प्रिंट कर दें तो इट इज गिविंग दैट। सो ये भी एक ऑप्शन है। तो यहाँ पे ऑपरेटर की बात की है, तो जनरल मैथमेटिक्स में हम इसको आई की से रिप्रेजेंट करते हैं, वी कॉल इट आयोटा, बट इन पाइथन प्रोग्रामिंग एक्चुअली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग जे, और उसको हम कुछ ऐसे लिखते हैं 2 + 3j, दैट इज सेम। और j का मतलब यहाँ पे क्या है, j को यू कैन स्पेसिफाई j इन अपर केस और लोअर केस, यहाँ पे केस सेंसिटिविटी प्रॉब्लम नहीं है, एंड j स्क्वायर इक्वल्स टू -1, दैट इज सेम, बस i की जगह j कर दिया इन्होंने, अदरवाइज इट इज सेम। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट। तो इसके थ्रू हम कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स के साथ डील कर सकते हैं। अगर आपने देखा हो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री वगैरह में हम इसको यूज करते हैं, तो साइंटिफिक कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस में भी हम इनका यूज कर सकते हैं। तो इसकी डायरेक्ट सपोर्ट है यहाँ पे, अगर हम चेक भी करें यहाँ पे, सी केस लेके चलते हैं इसका। सपोज आई एम हैविंग वन कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी 2 + 3j, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इफ यू लुक एट इट, इट विल डिस्प्ले लाइक दिस। एंड सपोज इस पे हम ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स। सपोज एक और मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, सपोज 4 + 2j, तो ये मेरा भी हो गया। अगर मैं a + b करूं तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे काम करता है, हाँ जी, कैसे काम करता है कॉम्प्लेक्स नंबर, it adds क्या the आउटपुट आना imaginary चाहिए। parts and the rational parts separately. हाँ, तो एक्चुअली क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, ये जो हमने बात की ना, तो दो ये इस तरह से हुआ, a + ib, सपोज j लिखना चाहिए बल्कि a + bj, जो कन्वेंशन है पाइथन की, उसी तरीके से लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, a रिप्रेजेंट करता है आपके रियल पार्ट को, एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन ये है, रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट, और उसके बाद ये सिंबल जो भी आप यूज कर रहे हैं, पाइथन में j यूज कर रहे हैं। तो यहाँ 2 + 3j में ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, राइट। तो अगर मैं एडिशन करता हूँ नंबर्स का, तो रियल पार्ट से ऐड होता है अगर एडिशन कर रहे हैं, और ये इमेजिनरी अगर इससे होता है तो क्या आउटपुट आना चाहिए। मैंने सपोज आउटपुट को एक वेरिएबल सी में स्टोर किया, तो क्या आउटपुट आना चाहिए सी का, अगर मैं प्रिंट करूँ 6 + 5j, तो इट विल बी 2 + 4, दैट इज 6 + 5j। इट इज वर्किंग। इसी तरह से इनका मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है। अगर मैं a × b करूँ तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये उनका आउटपुट दे देगा। अगर मैं किसी एक वेरिएबल में स्टोर करके देखूँ, इसको डायरेक्टली दे देगा एक्सप्रेशन, बट मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, इट इज गिविंग यू दैट 2 + 16j। आप करके भी देख सकते हैं इसको, सी अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 2 4 में होएगा, 2 मीन्स यहाँ पे 2 4 से, फिर 2 2j, फिर 3j 4, फिर 3 2j, और यहाँ पे j स्क्वायर है, j स्क्वायर -1 है, तो यही आएगा। कैलकुलेट आप करके देखेंगे ना, तो 2 + 16j, इसी तरीके ये आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट है, इट इज गिविंग यू दैट। कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, और ध्यान रखिएगा j स्क्वायर इक्वल्स टू -1।
तब ये 2 बना है, क्योंकि अगर 3j इंटू 2j करेंगे तो इट विल बी -6, और ये +8 हो रहा है 2 इंटू 4, तो 8 - 6 6 हो जाएगा। और इमेजनरी की बात करें तो 2 इंटू 2 4j, और ये 4 इंटू 3 12j, तो ऑब्वियसली 16j हो जाएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की भी एक यहाँ पे सपोर्ट है जो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये तो नंबर। अब फॉर एवरी टाइप, जब भी हम किसी पर्टिकुलर टाइप पे काम कर रहे हैं, standard data types, we have various predefined function, we have various built-in function based on the type. नंबर पे काम करें तो we have various नंबर बेस्ड फंक्शन, जिनको मैथमेटिकल फंक्शंस भी बोलते हैं, क्योंकि मेनली हम मोस्टली मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज कर रहे होते हैं नंबर का। सो वी हैव वेरियस फंक्शन बेस्ड ऑन नंबर, and further we will be dealing with other types also. So we have various built-in function, various predefined function based on string, list, tuple, dictionary and set. टाइम टू टाइम स्टेप वाइज हम इन टाइप्स की भी बात करेंगे, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की भी बात करेंगे, और पे बेस्ड जो फंक्शंस हैं उनकी भी बात करेंगे, जो कि हम फर्दर आगे रियल टाइम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में यूज करते हैं। सो हियर नाउ वी विल सी सम फंक्शन बेस्ड ऑन नंबर। बाकी तो एक्सप्रेशन ये लिखने का आपको पता ही है, हम अपने तरीके से एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक ऑपरेटर का केस हमें और लेना चाहिए। सपोज सी कुछ ऑपरेटर अगर मैं यूज करूं 5 डिवाइडेड बाय 2, सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट शुड बी द आउटपुट? मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूं, व्हाट डू यू थिंक, क्या आउटपुट आना चाहिए? 2.5 should come, but it'll probably be integer division. इट विल टेक फ्लोट। अगर 2.7 होता है, यहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं 3.8 3x सीरीज। 3x सीरीज में अगर इफ यू आर परफॉर्मिंग दिस डिवीजन बिटवीन टू इंटीजर टाइप वैल्यू, इवन इन दैट केस आल्सो वी विल बी गेटिंग फ्लोट आउटपुट। हाँ, 2x सीरीज होती है तो 2x सीरीज में अगर दोनों वैल्यू इंटीजर है तो इंटीजर आउटपुट लेता है, बट यहाँ पे ये फ्लोट ही लेगा। तो सी इफ आई एम सेइंग दैट इट विल टेक फ्लोट, सो इट इज टेकिंग दिस। एंड अगर कोई भी एक वैल्यू फ्लोट है ऑलरेडी, suppose we have 5.0 divided by 2, in that case also obviously it will take float। यहाँ पे भी आउटपुट जो होगा वो आपका फ्लोट टाइप होगा, राइट। नाउ देयर इज वन मोर डिवीजन। ये मेरा इंटीजर डिवीजन है। एक और डिवीजन होता है जिसको हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्लोर डिवीजन। इसके साथ कमेंट भी मैं लिख देता हूँ। क्या होता है? फ्लोर डिवीजन विल ऑलवेज टेक लोअर कंप्लीट नंबर, दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग फ्लोर एंड सील। एक्चुअली ये दो फंक्शंस भी होते हैं, मैथमेटिकल फंक्शंस हैं, उनकी भी बात अभी मैं करूंगा इन जस्ट अ बिट। तो इस केस में क्या होगा, अगर ये फ्लोर डिवीजन के साथ दोनों वैल्यू इंटीजर टाइप हैं तो आउटपुट भी आपका इंटीजर टाइप होगा, और उस इंटीजर टाइप में भी ये लोअर वैल्यू पे जाएगा, क्योंकि 2.5 ये है तो उसका इंटीजर अगर कन्वर्ट होता है तो क्या होना चाहिए, तो वो लोअर पे जाएगा। तो सी इसलिए इसको फ्लोर डिवीजन बोला है। तो व्हाट शुड बी द आउटपुट, व्हाट डू यू थिंक, क्या आउटपुट आना चाहिए एक्स के अंदर? 2। सो इट इज गिविंग 2। हाँ, अगर इनमें से कोई भी एक वैल्यू आपकी फ्लोट हो तो अब क्या आना चाहिए, और ये फ्लोट डिवीजन लेगा। मैंने बताया फ्लोट मींस जो भी वैल्यू उसका लोअर कंप्लीट नंबर, तो क्या आना चाहिए? 2.0 और हेलो। 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 So your mic is off. सर ऑफलाइन गए क्या?
Okay, there was some network connectivity problem. Now I'm connected again here, so I'm sharing my screen again. So I have shared my screen again. Is it visible? Yes, Yes, sir. sir. Okay. Yes, sir. So we can write our expression accordingly. And here in this PPT, I have mentioned the difference between 2x and 3x also. See, 2x में int और long दोनों होते थे, but Python 3 में as we know that there is no limit, तो इसलिए long को भी हटा दिया गया क्योंकि उसका कोई meaning नहीं रहा. So here, so I have mentioned this thing in red color that it is not supported in Python 3x. Long नहीं होता वहाँ पे. बाकी float और complex की हमने बात कर ली है. बाकी वी कैन क्रिएट अवर ओन एक्सप्रेशन एज पर और रिक्वायरमेंट वैल्यू असाइन करके उनको हम फिर अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं. राइट, ये भी चीज़ हम कर चुके हैं. राइट, और बाकी ये तो है ही, वेरिएबल मस्ट बी डिफाइंड बिफोर दे कैन बी यूज, और डिफाइन करने के लिए कोई ना कोई वैल्यू असाइन होनी चाहिए. वैल्यू असाइन नहीं करेंगे तो वेरिएबल डिक्लेयर नहीं होता बिकॉज ऑफ डायनेमिक नेचर ऑफ पाइथन. ऑलरेडी यू हैव सीन दैट. राइट सर, आपने रिजल्ट नहीं बताया उसका क्या है? हाँ जी, तो वो क्या 5.0 डिवाइडेड बाय डबल स्लैश 2 का रिजल्ट नहीं बताया. हाँ, तो सी ये फ्लोर डिवीजन कहलाता है, फ्लोर वर्ड है. अच्छा, एक इससे के लिए एक काम करता हूँ मैं. आई हैव मेंशन दैट विद एवरी टाइप वी हैव वेरियस फंक्शन. तो बहुत सारे मैथमेटिकल फंक्शंस हैं. कुछ फंक्शंस तो हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं बिना किसी मॉड्यूल को रेफर किए हुए. जैसे अगर आप देखो, प्रिंट फंक्शन मैं यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रिंट करने के लिए यूज कर रहा हूँ मैं वैल्यू को, तो मैंने कोई मॉड्यूल रेफर नहीं किया है, बट स्टिल ये प्रिंट फंक्शन वर्क कर रहा है. इट इज यूज टू प्रिंट. अभी मैंने इससे पहले एक पावर फंक्शन भी यूज किया था, मैंने कोई मॉड्यूल तो इंपोर्ट किया नहीं, फिर भी उसने काम किया. राइट, सो देयर आर सम फंक्शन फॉर विच वी नीड नॉट टू इंपोर्ट एनी मॉड्यूल. अगर ऐसे फंक्शंस का नेम देखना है तो उसके लिए एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं हम. यूज वन एट्रीब्यूट फंक्शन के थ्रू हम उनको देख सकते हैं. डबल अंडरस्कोर बिल्ट इन. पाइथन में जब भी हम डबल अंडरस्कोर करके कुछ लिखते हैं, ये प्रीडिफाइंड एट्रीब्यूट होते हैं. तो अगर मैं एक टास्क लिखूं तो ये आपको हियर इट इज शोइंग समथिंग टू यू. क्या दिखा रहा है? सो अगर आप ये फंक्शन यूज करें और ये टाइप करें इसके अंदर, जो कि एक बिल्ट इन एट्रीब्यूट है, तो सबसे पहले तो इनको तो भी इग्नोर कर दो. एक्चुअली ये सब एक्सेप्शन क्लासेस हैं. एक्सेप्शन हैंडलिंग पे हम बाद में बात करेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बाद तब आएंगे. और बाकी ये जो डबल अंडरस्कोर करके, ये सब प्रीडिफाइंड एट्रीब्यूट है. हर एक एट्रीब्यूट का अपना एक स्पेसिफिक मीनिंग है, जिनकी हम बात करेंगे टाइम टू टाइम. इसके बाद ये जो है, ये फंक्शंस हैं. इस यहाँ से जो है ये सब प्रीडिफाइंड फंक्शन है. इन फंक्शंस को यूज करने के लिए आपको किसी मॉड्यूल की जरूरत नहीं होती. और ये जो डिफरेंट फंक्शन है, डिफरेंट टाइप पे बेस्ड फंक्शन है. कुछ नंबर बेस्ड फंक्शन है, कुछ स्ट्रिंग बेस्ड फंक्शन है, कुछ लिस्ट, टपल, डिक्शनरी या सेट बेस्ड फंक्शन है. और इनको हम टाइम टू टाइम यूज करते रहेंगे. इनमें से कुछ हमने यूज किए भी है, जैसे पावर, प्रिंट, राइट, इंट भी हमने यूज किया था. राइट, तो वो सब भी यहाँ पे मिलेंगे आपको. तो जो भी हमने अभी तक यूज किया ना, तो इनको करने के लिए मेरे को कोई मॉड्यूल की जरूरत नहीं पड़ी. बट कुछ फंक्शन ऐसे हैं, कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस ऐसे हैं जिनके लिए मॉड्यूल की जरूरत पड़ती है. तो यहाँ पे एक मॉड्यूल है, मैथ मॉड्यूल. तो मॉड्यूल में कंटेन वेरियस फंक्शंस एंड क्लासेस. तो अब मैथ मॉड्यूल ये प्रीडिफाइंड मॉड्यूल है, स्टैंडर्ड मॉड्यूल है, जो हमने इंस्टॉल किया है अपना इंटरप्रेटर, उसी के साथ मिलता है. तो इट इज कंटेनिंग वेरियस फंक्शन रिलेटेड टू द अलजेब्रा, रिलेटेड टू द ट्रिगोनोमेट्री. बहुत सारे मैथमेटिकल फंक्शन कंटेन करता है, बहुत सारे एल्जेब्रिक और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, मैथमेटिकल फंक्शंस को ये कंटेन करता है. लेकिन वो फंक्शन मैं डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता. जैसे मैथ के अंदर एक फंक्शन होता है SQRT. तो अगर मैं इसको यूज करूं, विच इज यूज टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर, और पैरामीटर फंक्शन की बात करेंगे, पैरामीटर वैल्यू भी पास करनी पड़ेगी, इनपुट वैल्यू, जिसपे एक प्रोसेस करेगा, तो ये स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेगा, इसका जो भी आउटपुट है वो देगा. लेकिन अभी मैंने मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट नहीं किया है. अगर डायरेक्टली हमें पता है इसके अंदर ये फंक्शन है, तो अगर मैं इसको अभी यूज करने की कोशिश करूं तो ये एरर दे देगा. इट इज शोइंग नेम एरर, नेम मैथ इज नॉट डिफाइंड. क्योंकि आप रिकॉग्नाइजेबल तब तक नहीं होगा जब तक आप इसको इंपोर्ट ना करें, रेफर ना करें यहाँ पे. तो कैसे इंपोर्ट करते हैं किसी मॉड्यूल को? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू वांट टू
use any functions contained by a particular module, you need to import that module first. And to import a module, you will write import and your module name. तो जैसे मैं करूंगा import math, अब मैथ के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं वो सब अवेलेबल हो जाएंगे. सी इवन व्हेन यू विल पुट मैथ डॉट, कंट्रोल स्पेस बार दबाई या थोड़ी देर वेट करें तो इट इज शोइंग ऑल द फंक्शंस कंटेन्ड बाय इट. सो इफ यू सी, इसके अंदर बहुत सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस हैं. तो एज पर आवर रिक्वायरमेंट वी कैन मेक यूज ऑफ इट. अब अगर मैं ये स्टेटमेंट यूज करूं यहाँ पे, यही वाला math.sqrt, तो अभी रिकॉग्नाइजेबल है. इवन अगर यहाँ पे हम वैसे भी करें ना, ये आपको इंटेलिजेंस फीचर भी देता है, स्क्वायर रूट, राइट. सी अगर मैं जैसे यहाँ पे पुट करूंगा दिस पैरेंथेसिस, ये आपको डिस्क्रिप्शन भी देगा. इट इज शोइंग दैट आप एक पैरामीटर पास करेंगे और ये करेगा क्या फंक्शन, इट विल रिटर्न द स्क्वायर रूट ऑफ द सप्लाइड वैल्यू. तो अगर मैंने पास की 25 तो इसका ये स्क्वायर रूट देगा, राइट. इट इज शोइंग. अगर मेरे को किसी और वेरिएबल में स्टोर कराना होता है इसको, तो वो भी हम करा सकते थे, कोई भी वेरिएबल लेके तब इक्वल्स टू करके ही करें. तो ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है वैल्यू 50, वो मैंने एस में स्टोर करा दिया, फिर आप इसको प्रिंट करा लो, राइट. सो इसी तरीके से इसके अंदर और भी कुछ फंक्शन है. जैसे एक फंक्शन है math.floor. फ्लोर को अगर हम देखें, इट इज शोइंग रिटर्न द फ्लोर ऑफ एक्स एज एन इंटीग्रल. तो फ्लोर वैल्यू क्या होती है? फ्लोर वैल्यू बेसिकली जो भी आप वैल्यू स्पेसिफाई करोगे उसकी लोएस्ट कंप्लीट नंबर को ये लेगा सिंपली, राइट. अगर मैं इसको थोड़ा सा दूसरे टर्म्स में बोलूं, इस फ्लोर को अगर मैं दूसरे टर्म में डिफाइन करूं, तो वी कैन स्पेसिफाई दैट फ्लोर क्या करता है, इट विल टेक लार्जेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन द स्पेसिफाइड वैल्यू. अगर मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू की है, इट विल टेक, सपोज मैंने एक वैल्यू पास की 125.67, so it will take largest integer not greater than this value. तो obviously एक lowest complete number लेगा. तो इसका lowest complete number क्या होगा? lowest integer क्या होगा इस वैल्यू को कंसीडर करते हुए? क्या पॉसिबल वैल्यू होगी? 125. so it will take that. ये है फ्लोर. और एक इसी के जैसा, लेकिन इसका जस्ट ऑपोजिट फंक्शन है सीलिंग, राइट. फ्लोरिंग, सीलिंग मींस अपर वैल्यू. तो सील क्या करेगा? ये इसका जस्ट ऑपोजिट है. सील का क्या मतलब है? ये क्या करेगा? इट विल टेक स्मॉलेस्ट इंटीजर नॉट लेस देन दिस. तो इसका मतलब है, दूसरे सिंपल वर्ड में बोले, इट विल टेक द अपर वैल्यू, अपर कंप्लीट नंबर. इससे अपर वैल्यू लेगा जो कि कंप्लीट नंबर होगा. तो क्या आना चाहिए? ऐसा कौन सा है जो होल नंबर होगा? अपर हो 126, राइट. सो दैट इज सील. अब ये फंक्शन होते हैं इस तरह के, इसीलिए इस डिवीजन को भी है ना, जो ये डिवीजन है यहाँ पे इसको फ्लोर डिवीजन बोल दिया है. तो अब समझ गए इसका मतलब क्या है. अगर दोनों इंटीजर है तो आउटपुट तो लोअर वैल्यू पे ही जाएगा, और दोनों इंटीजर है तो इंटीजर लेगा. पहले 2.5 है, इंटीजर लेगा तो 2. लेकिन अगर ये इनमें से कोई भी एक या दोनों वैल्यू फ्लोट है तो फ्लोट ही लेगा, लेकिन ये लेगा केवल फ्लोर डिवीजन. तो ये जो डेसिमल के बाद जो वैल्यू उसको इग्नोर करता है, लेकिन डेसिमल लेगा तो 0 कर देगा उसको सिंपली. तो 2.5 नहीं लिया इसने, फ्लोर अगर हमने किया, इट इज टेकिंग 2.0. हाँ, अगर मैं सिंगल इंटीजर डिवीजन करता लाइक दिस, तो फिर ये आपकी फ्लोर वैल्यू ले लेता. तो जैसा मेरी रिक्वायरमेंट है किसी सिचुएशन में, रिक्वायरमेंट में अकॉर्डिंगली हम या तो ये यूज करेंगे, ये इट डिपेंड्स ऑन अवर रिक्वायरमेंट. आई होप इट इज क्लियर टू यू. हाँ, ये भी क्लियर है. Yes, sir. Yes, sir. Now we will, with this we will proceed further. ये कॉम्प्लेक्स वगैरह का तो हमने ले लिया है, और बाकी इसके एट्रीब्यूट भी हैं कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर को कई तरीके से भी रेफर कर सकते हैं. वो मैंने दिखाया. जैसे एक तरीका तो ये है, पीपीटी में है तो उसको भी लेते हुए चलते हैं. एक तरीका तो कॉम्प्लेक्स नंबर को रेफर करने का ये था कि सिंपल हमें इसी तरीके से लिख दे, ये भी ले लेगा. और सेम नंबर को हम ऐसे भी रेफर कर सकते हैं, एक फंक्शन भी यूज कर सकते हैं. सपोज एक मैं b इक्वल्स टू, एक फंक्शन होता है कॉम्प्लेक्स के अंदर 2 पैरामीटर हम पास करते हैं, रियल और इमेजिनरी. अगर सेम नंबर मेरे को रेफर करना तो आई कैन राइट 2, 3. तो ये इसका कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएगा और उसको रिप्रेजेंट करेगा 2 + 3, 2 या रियल पार्ट और सेकंड पैरामीटर रिप्रेजेंट इमेजिनरी पार्ट. तो अगर मैं b को डिस्प्ले करूं तो इट विल गिव दैट. सो दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर. और ऐसा भी हो सकता है कि किसी नंबर से मैं रियल और इमेजिनरी पार्ट निकाल सकते हैं. सपोज मेरे को इसका रियल पार्ट चाहिए केवल, तो एक एट्रीब्यूट है a मीन्स ये नंबर, और अगर मैं करूं a.real तो ये केवल रियल पार्ट इसका देगा, राइट.
अगर मैं इसका इमेजिनरी पार्ट लेना चाहता हूँ तो a डॉट imag करके हमारा यहाँ पे ये होता है imag, तो इट इज जस्ट फॉर दैट। तो पीपीटी में इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया। सो हियर वी हैव टेकन इट, और ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, रियल और फ्लोट को तो कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब टाइप कास्ट कर सकते हो, बट कॉम्प्लेक्स नंबर को नहीं कर सकते, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में जो ये इमेजिनरी है ना, एक्चुअली वी आर कॉलिंग इट इमेजिनरी क्योंकि किसी एक्सिस पे ये डिफाइन ही नहीं हुआ, इसलिए इसको हम इमेजिनरी बोलते हैं। तो उसको आप कन्वर्ट कैसे कर सकते हो जो पहले से ही अपने आप में क्लियरली डिफाइंड नहीं है। तो अगर कन्वर्ट नॉर्मल के साथ तो कन्वर्ट हो जाता, सपोज मीन्स सपोज एक नंबर है मेरा इक्वल्स 2.5, इसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट करूं, सपोज एक वेरिएबल लेता हूं b और उसमें इंटीजर चाहिए मेरे को, इसी को कन्वर्ट करके, तो हम ऐसा करेंगे तो इंटीजर ले लेगा, कन्वर्ट हो जाएगा। या मेरे को इस b के अंदर जो है इसको मेरे को फ्लोट में कन्वर्ट करना है, उसको c में स्टोर करना है, तो आई कैन राइट फ्लोट और मैं b कर देता हूं जो कि इंटीजर टाइप है, और c की वैल्यू को करूंगा तो ये 2.0 दिखाएगा मेरे को, राइट। सो इट विल बी कन्वर्टेड। लेकिन आप कॉम्प्लेक्स नंबर को कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन करूं ये, और अब इसको आप कन्वर्ट करने की कोशिश करें किसी भी टाइप में, सपोज अब ये करूं मैं भी इंट ए यहाँ पे रिप्रेजेंट करा है कॉम्प्लेक्स नंबर, इट विल गिव यू एरर, कांट कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स टू इंट, तो उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। बाकी अब हम डिस्प्ले करेंगे यहाँ पे कुछ फंक्शंस। एब्सोल्यूट बड़ा सिंपल सा फंक्शन है। एब्सोल्यूट में आप ये एक इंटीजर वैल्यू पास कर रहे हैं। अब ये चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव हो, इसका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर आप नेगेटिव वैल्यू पास करेंगे तो भी पॉजिटिव 45, पॉजिटिव करेंगे तो भी पॉजिटिव, दैट्स इट, ये एब्सोल्यूट है। और बाकी सील फंक्शन ऑलरेडी हैव डिस्कस, और रिमेंबर दे सील फंक्शन एक मॉड्यूल मैथ के अंदर है, तो पहले इंपोर्ट होना चाहिए मॉड्यूल, तभी ये काम करेगा। फ्लोर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह मैक्स, मिन, पावर, स्क्वायर रूट, ये सब भी है। राउंड पे अब हम आएंगे। मैक्स मीन्स कोई भी वैल्यू पास करे जितनी भी उनका मैक्सिमम लेगा। मिन में कोई भी वैल्यू पास करे, नंबर न्यूमेरिक वैल्यू पास करे तो उनका जो भी ऑब्वियसली मिनिमम होगा उसको लेगा। कि सपोज जैसे अगर मैंने लिखा यहाँ पे मैक्स और यहाँ पे कुछ इंटीजर वैल्यू मैंने पास की, ये मैक्सिमम ले लेगा। इसी की जगह मैं मिन कर दूं, मिनिमम वैल्यू लेगा, दैट्स इट। अब आते हैं हम यहाँ पे एक फंक्शन राउंड पे। अब एक राउंड का केस लेते हैं, उसके कुछ केसेस लेते हैं। सो हियर आई एम टेकिंग द केस ऑफ राउंड। सपोज एक नंबर हम लेते हैं यहाँ पे, लेते उसको थोड़ा, सपोज एक नंबर है, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ 125 पॉइंट कोई भी ले लो 567 सपोज। सो राउंड में दो पैरामीटर है आपके, अगर आप चेक करें राउंड फंक्शन, और उसके लिए किसी मॉड्यूल की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बिल्ट इन मॉड्यूल में ही बिल्ट इन नेम स्पेस में अवेलेबल है। इसको हम बिल्ट इन नेम स्पेस बोलते हैं। ये जो यहाँ पे इसके थ्रू जो हम चेक करें ना, ये जितने भी फंक्शंस हैं यहाँ पे, यहाँ से लेके ये सब बिल्ट इन, इनको हम बोलते हैं दीज आर इन बिल्ट इन नेम स्पेस। तो बिल्ट इन नेम स्पेस में जो भी होता है उनके लिए किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये राउंड भी यही है, चेक करेंगे तो राउंड भी है। अब राउंड के साथ दो पैरामीटर, अगर आप यहाँ पे देखें, नंबर जिसको राउंड करना है और कितने नंबर ऑफ प्लेसेस तक आपको राउंड करना है। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है तो ये डेसिमल के राइट साइड में राउंडिंग करता है, अगर ये नेगेटिव है तो ये डेसिमल के लेफ्ट साइड में आपकी राउंडिंग करेगा। कितने प्लेसेस तक वो आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। अगर आप सेकंड पैरामीटर स्पेसिफाई नहीं करते तो ये 0 प्लेसेस तक राउंड करेगा। और जब राउंड करेंगे हम ये भी ध्यान रखना कि जहां तक राउंड कर रहे हैं वो वैल्यू वहां पे 5 उससे ज्यादा है, उससे कम तो नहीं है, क्योंकि अगर ये 5 से ज्यादा है तो नेक्स्ट वैल्यू विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1। तो ये 0 प्लेस तक यहाँ पे राउंड करेगा। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या आउटपुट आना चाहिए? 126। यस, बिकॉज ये मेरा 5 है। इसी को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते थे, राउंड x 0 तो भी सेम है, बस यहाँ के टाइप बदल जाएगा, लेकिन यहाँ पे इंटीजर टाइप है, ये 0, बाकी वैल्यू सेम है। अब सपोज अगर मैं यहाँ पे मेरे को चाहिए 2 डेसिमल प्लेसेस तक, वैल्यू इसी पे चला रहा हूँ मैक्स 2 डेसिमल प्लेस, तो आई कैन राइट 2। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट विल बी द आउटपुट, व्हाट शुड बी द आउटपुट? ये वैल्यू है। तो 2 मीन्स आई एम परफॉर्मिंग राउंडिंग
up to 2 decimal places in the right. अगर पॉजिटिव आई वैल्यू इन द राइट इट विल परफॉर्म मींस आफ्टर डेसिमल. तो 2 प्लेसेस तक कराओ, लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान रखेंगे जब आप राउंडिंग कर रहे हो ये वैल्यू आपकी 5 उससे ज्यादा है, कम तो नहीं है. उससे ज्यादा है तो नेक्स्ट वैल्यू विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1. अगर ये बाय 1 इंक्रीमेंट होगी तो क्या वैल्यू होनी चाहिए, क्या आउटपुट होना चाहिए यहाँ पे? 125.57. 125.57. बिल्कुल ठीक है. तो सी इट इज गिविंग यू दैट. बट नाउ सपोज अगर मैं यहाँ पे इसको कर दूं नेगेटिव. नेगेटिव का मतलब यू आर परफॉर्मिंग राउंडिंग बिफोर डेसिमल. बिफोर डेसिमल -2 का मतलब है यहाँ तक, इस प्लेस को राउंड कर रहे हैं. तो जिस प्लेस तक राउंड कर रहे हैं उसको चेक करेंगे. अगर ये 5 या उससे ज्यादा है तो नेक्स्ट वैल्यू विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1, अदरवाइज उसी को लेगा. ठीक है ना. तो लोअर पे जाएगा, तब भी लोअर पे जाएगा. तो मतलब जो करेक्ट राउंडिंग में करेक्ट रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है तो क्या होनी चाहिए अगर मैंने -2 किया? 1.3. 2 है, ये 5 तो है नहीं. तो 2 है तो ये पूरा राउंड हो जाना चाहिए, राउंड हो जाना चाहिए. तो क्या करेक्ट रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होगी अगर मैं यहां तक राउंड कर रहा हूं इसको? बताओ. 2 प्लेसेस तक राउंड कर रहा हूं तो क्या करेक्ट रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होगी? इसको भी राउंडिंग कर रहे हैं हम, -2 है ये. तो क्या क्या करेक्ट रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होनी चाहिए? क्योंकि 120 तो तब होता अगर मैं यहां तक करता. अगर एक तरीके से आप उसको भी देखें, वैसे तो 5 है तो चेंज होता, बट यहाँ तो इसको भी राउंड कर रहे हैं. राउंड कर रहे हैं तो क्या आना चाहिए? 100. क्योंकि यहां तक राउंड करेंगे तो नेक्स्ट जो करेक्ट रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होगी ना 2 को कंसीडर करते हुए, दैट विल बी 100. हाँ, इसकी जगह अगर मैं -1 करता, अब बताओ -1 पे क्या होगा? -1 का मतलब यहां तक राउंड कर रहे हैं और जिसको राउंड करें 5 है. मैंने बताया अगर ये 5 उससे ज्यादा है तो नेक्स्ट वैल्यू विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1. तो क्या अब वैल्यू होनी चाहिए करेक्ट रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू अगर मैं राउंडिंग कर रहा हूं इसकी? 130. 130. 130. आर यू गेटिंग? हाँ, इसको अगर मैं चेंज कर दूं, सपोज मैंने इसको कर दिया 155, वैल्यू चेंज की और फिर से मैं ये वाला x-2 ले आया. अब बताओ व्हाट डू यू थिंक, क्या आउटपुट होना चाहिए इसका? 200. 200. ठीक है. आई होप यू आर गेटिंग इट नाउ कि कैसे काम हो रहा है राउंडिंग का. Yes, आर sir. यू गेटिंग इट? Yes, sir. Yes, sir. तो ये कुछ फंक्शन है जो हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं. सो आज के लिए इतना ही रखते हैं. Now, in the remaining time, I will give you one exercise, and this is very basic exercise. The purpose of this exercise just to make you familiar with this Python environment, right? So I'll be sharing it at Google Classroom. तो अभी एक Google Classroom मैं बना देता हूँ आपके बिग डेटा और ये PGDBDA के लिए और AI के लिए अलग अलग बना देता हूँ. एंड आई एम शेयरिंग ऑल दीज रिसोर्सेज, जो PPT, जो सैम्पल कोड, ये जो टेक्स्ट फाइल, ये जो हमने यूज किया इसको सेव भी कर देते हैं. सो आई एम शेयरिंग ऑल दीज एट, आई विल बी शेयरिंग ऑल दीज एट दैट गूगल क्लासरूम. तो अभी मैं जस्ट क्रिएट कर लेता हूँ और क्रिएट करके फिर उसका मैं इनविटेशन लिंक आपको शेयर करता हूँ जिससे कि आप उसको ज्वाइन कर लें. राइट, टिल देन यू कैन हैव ए ब्रेक. अभी ये 3:44 हो रहा है, सो वी विल कंटिन्यू अ सेशन एट 4 o'clock. टिल देन यू कैन हैव ए ब्रेक. ठीक है, तो आफ्टर 15 minutes वी विल कंटिन्यू दिस सेशन. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.
Okay, students, I am back. So here I have already shared the invitation link to join Google Classroom uh, in our WhatsApp group, and I have shared the same in the chat box of MS Team also. तो आप उस लिंक पे क्लिक करके प्लीज ज्वाइन कर लीजिए जो रेस्पेक्टिव ग्रुप है डीबीडीए और डीआई के अलग अलग मैंने लिंक भेजे हैं सो प्लीज ज्वाइन द गूगल क्लासरूम बाय क्लिकिंग ऑन द रेस्पेक्टिव ग्रुप लिंक रेस्पेक्टिव बैच लिंक उसके बाद मैं फिर शेयर करता हूँ रिसोर्सेज क्योंकि अगर ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद फिर रिसोर्सेज जो मैं शेयर करूंगा वो आपको डिस्प्ले होंगे सो प्लीज डू इट क्विकली It's done, sir. ओके फाइन जिन्होंने नहीं किया प्लीज कर लीजिए प्लीज डू इट क्विकली उसके बाद फिर मैं रिसोर्स शेयर करता हूँ और आज की लैब एक्सरसाइज भी एंड प्लीज मेक श्योर कि आपने अपने रेस्पेक्टिव ग्रुप के लिंक पे ही क्लिक किया मतलब डीआई स्टूडेंट डीआई के लिंक पे ही क्लिक करके ज्वाइन करें और डीबीडी स्टूडेंट्स डीबीडी के लिंक पे ही क्लिक करें ऐसा ना हो कि आप अपोजिट कर लें राइट सो प्लीज मेक श्योर इट
Sir, Yes, tell me. hello. Yes, tell me. सर आपने मटेरियल पोस्ट कर दिया है क्या? नहीं नहीं, अभी पोस्ट नहीं किया है, अभी बस जस्ट आपको डे 1 दिख रहा होगा, अभी किया नहीं है। एक्चुअली आई एम हाँ। वेटिंग फॉर स्टूडेंट्स कि एक बार ज्वाइन कर ले तो ही मैं उनको पोस्ट करूँ। कभी कभी क्या होता है कि मैं पहले पोस्ट कर दूं और जो बाद में ज्वाइन करते हैं ना उनको वो व्यू नहीं होता, इसलिए अभी मैं ओके ओके रुका सर। हूं। ठीक है, अभी बस मैंने टैग क्रिएट किए, हेडिंग्स क्रिएट किए। वो ये ठीक है, एम्प्टी दिख रहा था मेरे को सर। हाँ हाँ, वो भी एम्प्टी है। जस्ट वेट फॉर 2 or 3 more minutes। मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ कि एक बार सभी लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद फिर मैं शेयर करता हूँ। ठीक है। ओके सर, ओके सर। Sir, have you posted that exercise or just made that post? Now I have posted. Now you can check. Okay, sir. I have posted the resources and the exercise as well. So now in the remaining time, you will work on this practice. So you will practice this exercise, and if you will be having any query, any doubt, please discuss it with me. ठीक है। आप कोई भी एडिटर या कोई भी वर्जन यूज कर सकते हैं पाइथन का, कोई भी आइडियली यूज कर सकते हैं। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो स्टैंडर्ड आइडियली कर लीजिए, python.org पे अवेलेबल है। So just work on it, and if you are facing any problem in anything related to theoretical concept, related to lab exercise,
Whatever doubt you will be having, please discuss it with me. So now you can continue to do practice on this exercise. Sir, Yes, tell me. will it be okay if we work on Colab? Yeah, it's not a problem. तो मतलब Colab की sheets को download करके upload कर सकते हैं, right? हाँ हाँ, आपको करना अपलोड करने के लिए आप क्या करेंगे, डोंट अपलोड द ओरिजिनल फाइल्स, just try the programs given in just try the problems given in the exercise and just copy the code and paste it in some document file. उसको आप document file में कर सकते हैं या टेक्स्ट किसी भी नोटपैड फाइल में कर सकते हैं, चाहे आप डॉक्यूमेंट फाइल का पीडीएफ बना सकते हैं, उसको फिर करना है उसी में सारे क्वेश्चन का आप जो भी आपने प्रोग्राम लिखा है वो करेंगे, पेस्ट करके कॉपी करके अपने कोलैब या जिस इन्वायरमेंट में आप काम कर रहे हैं पेस्ट करेंगे और उस फाइल को एक सिंगल डॉक फाइल को, टेक्स्ट फाइल को या पीडीएफ फाइल को आप अपलोड करेंगे जो भी असाइनमेंट सेक्शन में जो डेजिग्नेटेड एरिया होगा आपके पर्टिकुलर एक्सरसाइज के लिए, ठीक है, इन दैट वे यू विल से।
Pranshu, is there any problem? मैं Pranshu, पूछना चाह रहा था कि जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली जो क्वेश्चन है हाँ जी, उसमें मैथ वाली लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं या कोई और यूज करनी पड़ेगी? उसमें सी मैथ जैसा मैंने हिंट में भी दिया है, जैसे जी जी मैथ मॉड्यूल है ना, इसी जी तरह से सी मैथ है, क्योंकि मैथ का जो एसक्यूआरटी है ना, हर जी एक जी वैल्यू के लिए काम नहीं कर पाएगा। अगर इमेजनरी वाला केस जनरेट हो गया तो मैथ ओके डॉट एसक्यूआरटी काम नहीं करेगा, तो इंपोर्ट सी मैथ करके सी मैथ डॉट एसक्यूआरटी करना है, इसलिए ठीक है वो सर, हिंट दिया गया है। ठीक है ना? थैंक यू सर।
Sir, one doubt. Yes, tell me. Sir, in general, in these questions, when they ask to take input for the things, like for example, question 6 and question 5 for the Mhm. coefficients and sides, should we, is it all right to just input them as integers, or do we have to take them as a float, to I take think care of more? it is up to you. It is up to you. You can take integer also, no problem. Okay, thank you.
So Yes, tell me. सर कंप्लीट हो गया है, वो अपलोड कर देते उसी पे। हाँ, if you have completed, then you can upload. सर मैंने कोलैब पे किया था तो आई हैव टेकन स्नैपशॉट्स और उसको वर्ड में डाल दिया, इट विल बी ओके राइट? हाँ, that is fine. That is fine. ओके।
Sir, regarding the submission, if I have all the questions in separate files, do I take the screenshots or send the file of the code as well as the output separately, or? No, you need not to save the file separately. You can do just one thing. You can specify screenshot, or you can just copy the code and paste it in a document file, right? And you can put screenshot of output also there. And finally, you can upload that document file. Okay, so we're not uploading the code at all, right? Just the No, screenshots. yeah, screenshot, or you can just copy paste the code also. In that way, you can specify, right? Okay, fine. Thank you. But don't upload the code file directly, right? Okay. Okay, students. So here I am going to close this session for today. Those who are still working on this exercise, please try it at your own pace. क्योंकि मैंने जो ड्यू डेट रखी है वो काफ़ी आगे है, तो ऐसा नहीं है, जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप अपने पेस से लॉजिकली चीज़ों को समझते हुए सॉल्व करिए इन एक्सरसाइज को, एंड प्लीज ट्राई टू सोल्व द एक्सरसाइज बाय योरसेल्फ ओनली. Don't take the help of internet, right? Please try to solve it by yourself only, right? Only then real purpose will be solved. और कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी आपको क्वेरी होती है, तो डिस्कस योर प्रॉब्लम्स, योर क्वेरीज विद मी, राइट? सो जिनका अभी रिमेनिंग है तो इस पे आप प्रैक्टिस करिएगा, और फर्दर कोई भी डाउट आते हैं रिलेटेड टू थ्योरेटिकल सेशन, रिलेटेड टू योर लैब एक्सरसाइज, we will be discussing tomorrow in lab session. So if you don't have any doubt, then we can close the session. And here I would like to mention one more thing. If you have any suggestion so that we can make our session even more interactive, your suggestions are always welcome, right? So Sir, I hope as हाँ जी बताइए. Sir, can I upload my file in PDF form? Yes, yes. Yes, sir. आप चाहते कोई भी एडिटिंग ना हो तो then you can convert your doc into PDF and you can Yes, sir. Thank you, upload sir. that also. Yes, sir. So I hope आज जो चीजें हमने की हैं बेसिक्स की, all of these things are clear to you. फिर भी कोई भी फर्दर, जैसा मैंने अभी
बताया, if you will be having any query for the, you can discuss your query with me at any time, right? Right, sir. Even when you will So, try. Yes, tell me, Ashish. yeah, just one question, sir. So obviously during the class sessions, we can interact with you. Post the class time, what is a good time for us to ask you questions and such? Because I'm sure you also need a break from always teaching. So what is a good time for us to approach you? You can contact me at any time, and if I'll not be busy in any other work, I'll help you. I'll try to solve your doubts as soon as possible. All right. Even if you Thank will you. be, when you will be trying the things, and if you will be having any doubt, you can mention your doubts in our WhatsApp group also, or you can WhatsApp me separately also. Right? Already you are having my number from the group. You can get it, right? Yes, sir. All right. Thank you. Right. So if you don't have any query right now, can we close the session now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. Thank you, sir. So thank you very much Thank you, for sir. attending this session. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.